Hello friends, welcome to iExamB. This is Vidhika, Law Faculty at iExamB. अभी कुछ दिन पहले ही सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर की नोटिफिकेशन आई थी जिसमें 16 वैकेंसीज थी एंड इट इज स्टिल एक्टिव. लास्ट डेट टू फिल दैट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेबी is 24th of Jan. Now another regulatory body, RBI, also has come out with notification for RBI Grade B legal officer. It is a direct scale 2 recruitment. While SEBI's recruitment was scale 1, RBI की scale 2 recruitment है and the salary expectation for RBI Grade B legal officer is about rupees 1,16,000 right at the time of your joining. Added to that, you will get a lot of perks and allowances. Let's have a look at the important aspects of the notification. If you look at important dates, you can fill the application form online from January 15 to February 4, and the date for written examination is March 6, 2022. अगर आप ग्रेड बी लीगल ऑफिसर की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2, सो द रिक्रूटमेंट इज फॉर 2 पोस्ट इन आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर देखें, द एज शुड बी बिटवीन 21 to 32 years, which is relaxable by 3 years in case of LLM and 5 years in case of PhD in law. In education qualification, you should have a bachelor degree in law with a minimum of 50% marks, and this criteria has been lowered for SC, ST and PWBD, which is about 45% marks in graduation. There is experience also required. ग्रेड बी की रिक्रूटमेंट है तो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती ही है. अ मिनिमम ऑफ 2 years एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड and in which of the areas you can be an advocate, legal consultant, legal assistant, associate in an advocate's or solicitor's office or law firm after being enrolled with the bar council. Another is you can be a law officer in a legal department of a large bank, financial institution, statutory corporation, company, state, central government, or you can also be a full-time teacher in a law college, university, teaching law. So this is the entire eligibility criteria. Now let's have a look at the scheme of exam. Selection will be through online and offline examinations and interview. Examination shall consist of objective and descriptive type क्वेश्चन पेपर्स एज डिटेल बिलो. 2 पेपर होते हैं. पेपर 1 आपका लॉ का होता है, पेपर 2 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का होता है. इन पेपर 1 देयर आर फर्दर 2 पार्ट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप. तो लॉ के पेपर ऑब्जेक्टिव भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा, और पेपर 2 आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है. मार्क्स आर ऑल्सो अलॉटेड एंड एट द एंड इंटरव्यू मार्क्स आर 40. सो टोटल 290 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनती है. इवन रिटन एग्जाम मार्क्स आर ऑल्सो कैलकुलेटेड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन एंड फॉर रैंकिंग पर्पज. अब मेजर कंफ्यूजन आता है इस ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स के थ्रू. सो लेट्स हैव अ लुक कि लास्ट ईयर के हैंड आउट में जिसमें डिटेल एग्जाम पैटर्न बताया था उसमें क्या मेंशन था. अगर आप देखेंगे इसमें पेपर 1 विच वाज योर लॉ ऑब्जेक्टिव पेपर में देयर वर 15 क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स. हर क्वेश्चन 2 मार्क का था. और जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर था इसमें 4 क्वेश्चंस थे विद सबसेक्शंस ऑफ 120 मार्क्स. वन थिंग टू नोटिस ओवर हियर, पेपर 1 जो था ऑब्जेक्टिव, it had 4 answer options and there was no penalty, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर में 4 सबसेक्शंस थे. हुआ क्या था कि ये जो पेपर था ऑब्जेक्टिव वाला, ये आपका ऑनलाइन था, क्वेश्चन स्क्रीन पे अपीयर होते थे, आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने थे. एंड देन फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर क्वेश्चन स्क्रीन पर अपीयर होते थे और इसको आपको ऑफलाइन मोड में आंसर करना था. यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस ऑन द शीट दैट इज प्रोवाइडेड टू यू, और उसके बाद आप उसको सबमिट करते थे इन द एग्जामिनेशन हॉल. एंड देन इन द आफ्टरनून यू हैड योर पेपर 2 इंग्लिश, जिसमें 4 क्वेश्चंस थे, एसे ऑफ 40 मार्क्स, प्रेसी ऑफ 24 मार्क्स, then there is comprehension of 16 marks and drafting report letter circular of 20 marks. total 100 marks और 3 hours का पेपर था. और ये जो पेपर 1 था दैट इज जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, दिस वाज सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी. आप आंसर्स हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आंसर करना ऑप्ट कर सकते हैं. Now if you look at the pays and allowance, this is a very great job, high paying job, regulatory body की job है, और that too in the legal department as a grade B legal officer. अगर आप यहाँ देखें, starting basic pay is rupees 55,200. Added to that, you are also eligible for dearness allowance, local compensatory allowance, house rent allowance, special allowance and grade allowance. And at present initial monthly gross emoluments are approximately rupees 1,16,684. And you are also allowed to have 4 increments in case you possess
very high academic or professional qualification or experience which is of significance value to the bank. Added to that, there are various other perquisites. There is reimbursement of expenses for maintenance of vehicle for official purpose. There is newspaper allowance, telephone charges, book grant, allowance for furnishing of residence. Then there is medical allowance, interest-free festival advance, leave fare concession, loans and advances at concessional rates of interest for housing, vehicle, education of children, consumer articles, so on and so forth. A very good paying job. This is the salary which is mentioned right at the time of your joining, and added to that you have a lot of perks and allowances. Now looking at the job profile, notification में job requirements clearly mentioned है. A legal officer in grade B will be dealing with references on legal issues received from various departments of the bank and its associate institutions, which are mainly related to the interpretation of various statutes. और कौन कौन से स्टेट्यूट्स होंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, कंपनीज एक्ट 2013. Also, you will be preparing initial drafts of legislation administered or to be administered by the bank. Another area of job profile is preparation of drafts of pleadings and comprehensive instructions or briefs to the council in connection with litigation involving the bank and its associate institutions. And the last one that is mentioned in the notification is appearing before conciliation officers, labor courts, tribunals, etc. on behalf of the bank. So all this is mentioned as the job requirements in the notification. Now, what is the syllabus for this exam? The syllabus is mentioned both for paper 1 and paper 2. In paper 1, which is your general knowledge of law, the major areas will be constitutional law, administrative law, principles of statutory interpretation, law of evidence, contract act, Transfer of Property Act, Negotiable Instrument Act, Registration Act, Code of Civil Procedure, and legal drafting. However, the syllabus is only indicative and not exhaustive. Questions can be from various other areas also, various other acts also, but majorly questions इन्हीं topics में से आते हैं. Then for your paper 2, which is your English descriptive, there will be essay, précis writing, comprehension, and business or office correspondence. अगर अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है लास्ट ईयर के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एट iexambee. अंडर दिस प्रीवियस ईयर टैब you will find RBI, in which there is RBI grade B legal, and here you will find RBI legal officer 2021 memory based paper, which is your law paper, and you can attempt this test. You can check out किस टाइप के questions थे objective paper में, descriptive paper में. Also at iexambee we provide free mock test for all the exams as well for RBI grade B legal officer. Under this free mock test, under RBI you can find RBI grade B legal officer, and here you will find free mock test for both objective and descriptive part of the exam. At iexambee we provide RBI grade B legal online course, and we help you in preparing for both the objective and descriptive part. In this course we provide you with video lessons, practice questions, study notes, study plans. There are 5 practice tests for paper 1, 5 practice tests for paper 2, and at the end we also provide you interview guidance for appearing the final exam. Last year we had one successful candidate. You can check out the testimonial of that successful candidate of RBI grade B legal, that is present in the description below. वहां से आप उस testimonial, उस success story को देख सकते हैं. If you are interested in any form of guidance, you can reach out to us. और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट भी अभी एक्टिव है. 24 Jan इज द लास्ट डे टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम. इस एग्जाम में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. दिस इज ग्रेड ए रिक्रूटमेंट. इन दिस एग्जाम यू रिक्वायर 2 years एक्सपीरियंस. तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आप वंडर कर रहे हैं कि कौन से एग्जाम के लिए अपियर होना है, सेबी ग्रेड ए इज एन इक्वली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. At present, we are giving flat 38% off on this combo course. You can use the code COMBO38. This discount is valid only from 14th of Jan to 16th of Jan. So hurry up. For any query, you can write down in the comment box. You can also call us on the number which is mentioned on the screen, or write to us at hello@iexambee.com. Don't forget to subscribe to our channel. We will come forward with the cutoff analysis, previous year paper, previous year में क्या cutoff रही है. You can find all of that on our channel. So subscribe to our channel and click the bell icon. Thank you so much.